Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice, practice, and practice. Now, before moving to next practice set 4.2, let's learn this concept GST trading chain. Okay. Any product is manufactured by some manufacturer in a company. Okay. Now, manufacturer sells the product to nearby wholesaler or distributor. Correct? From nearby wholesaler or distributor, a retailer, that means a shopkeeper, purchase from him that product, and then we as a consumer buy that product from the retailer. ये तो हमें पता है. करेक्ट. एक कंपनी क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूटर को माल देती है, होलसेलर को. होलसेलर किसे देता है? शॉपकीपर को. दैट इज कॉल्ड रिटेलर. और हम लोग क्या है? कंज्यूमर. So we buy from shops, that is retailers. Concept is clear. Now let's assume a product is of rupees 200. Product की original price क्या है? 200 rupees. Company is selling a product of rupees 200 to a distributor. Correct? On that product, GST charged by the government is 12%. GST कितना है? 12%. So 12% GST on 200 rupees, it comes 24 rupees. Correct? Now, since manufacturer is making the product, correct, he had not paid any GST before. Right? Now he want to pay GST to the government. So his input tax credit is nil, that is 0 rupees. Input tax credit कितना होगा उसका? 0 rupees hoga. Okay. So his output tax, how much output tax means? The tax he will pay to the government. Okay. So he will pay how much rupees to government? 24 rupees, which is collected from wholesaler, minus input tax is 0 rupees, is equals to he will pay 24 rupees to the government as GST. Okay. He has collected from wholesaler, but manufacturer is paying to the government. Concept is clear. अभी जाते हैं होलसेलर के पास. ओके. होलसेलर को वो चीज कितने में मिली है? 200 रुपीज. करेक्ट. अभी वो 200 में बेचेगा, उससे ज्यादा प्राइस में बेचेगा. ऑब्वियसली with his own profit he will sell, right? So let's say he is selling that product at rupees 300. He bought it for rupees 200, but now he is selling at rupees 300. सेम जीएसटी एप्लीकेबल 12%. तो 300 रुपीज पे 12% जीएसटी कितना हुआ? 36 रुपीज. करेक्ट. नाउ ही वांट टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, बट ही हैड ऑलरेडी पेड 24 रुपीज ऑफ जीएसटी टू द मैन्युफैक्चरर. करेक्ट. सो हिज इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ऑलरेडी देयर एज 24 रुपीज. So how much rupees wholesaler will pay to the government is equals to output tax 36 minus 24. He will pay 12 rupees to the government as GST. Why only 12 rupees? He has collected 36 rupees, but he is paying 24 rupees. He had already paid 24 rupees to the manufacturer. So his input tax credit he will minus from this GST, and then he will pay 12 rupees to the government. Now, होलसेलर ने चीज किसको बेची है? रिटेलर को. अब रिटेलर से कौन खरीदेगा? हम जनता. राइट? दैट इज कंज्यूमर्स. करेक्ट. सो कंज्यूमर दे आर गोइंग टू पे अगेन जीएसटी. टू whom? टू रिटेलर. अब रिटेलर क्या करेगा? उसको वो प्रोडक्ट कितने में मिला है? 300 में. करेक्ट. सो his price is, buying price is 300 rupees. Now he is selling that product at 400 rupees. Again he is collecting GST 12%. So how much GST is going to collect? 48 rupees on 12% on 400 rupees. That is 48 rupees ka GST he will collect. Correct. But he had already paid, retailer had already paid 36 rupees GST. Correct. He had already paid 36 rupees GST to wholesaler. Correct.
So his input tax credit is 36 rupees. So now, as he has collected 48 rupees as tax from the government, he will pay only a tax of 48 minus 36, that is 12 rupees to the government. So how much government is getting? See here, government is getting 24 rupees from manufacturer, 12 rupees from wholesaler, and 12 rupees again from retailer. So government is getting 24 plus 12, 36 plus 12, 48 rupees tax, which who has paid? Consumer has paid, right? हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया एज अ जीएसटी ऑन दैट प्रोडक्ट? 48 रुपीज, करेक्ट. बट वो टैक्स कैसे बाइफरकेट हुआ? मैन्युफैक्चरर ने दिया 24 रुपीज, होलसेलर ने दिया 12 रुपीज एंड रिटेलर ने दिया 12 रुपीज. टोटल गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड 48 रुपीज जीएसटी which consumer has paid to the government. कंसेप्ट इज क्लियर. इनपुट टैक्स का कंसेप्ट समझ में आ रहा है. मैन्युफैक्चरर को इनपुट टैक्स ऑलवेज 0. ओके. मैन्युफैक्चरर को जो जीएसटी मिला है किससे मिला? होलसेलर से. तो होलसेलर के लिए वो क्या हुआ? इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट. अभी होलसेलर ने जो जीएसटी कलेक्ट किया किससे? रिटेलर से. कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 36. वो रिटेलर के लिए क्या हुआ? इनपुट टैक्स क्रेडिट, करेक्ट. सो ऑलवेज आउटपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल्स टू नेट जीएसटी कलेक्टेड माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट. कंसेप्ट इज क्लियर. ये अगर आपको रिटेलर जीएसटी का ट्रेडिंग चेन समझ में आ रहा है, देन वी कैन फर्दर प्रोसीड टू प्रैक्टिस सेट 4.2. सो आर यू रेडी? सो नाउ विल गो टू प्रैक्टिस सेट 4.2. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू. Thank you for watching Top Maths.